ये कि कल जब और ये स्पष्ट भी है मालिक, मैं आपको रोकना चाहूंगा। इस वक्त आरबीसी की आरबीआई की बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है 2022-23. I welcome everyone to this statement, which will be followed subsequently at 12 o'clock by the usual press conference. 2 years ago, in March 2020, we began a journey to fight the onslaught of COVID-19 on our economy with courage and determination. During the period thereafter, the Reserve Bank has successfully navigated its course through turbulent waters. While the pandemic has scarred our psyche and tested our resilience, we have responded with bold, unconventional, and resolute measures to stabilize the economy through the 3 waves of the pandemic. As the situation normalized, we have taken measures towards rebalancing liquidity conditions while ensuring that our actions are nimble and proactive but well-timed. Now, 2 years later, as we were emerging out of the pandemic situation, the global economy has seen tectonic shifts beginning 24th February, with commencement of the war in Europe, followed by sanctions and escalating geopolitical tensions. We are confronted with new but humongous challenges: shortages in key commodities, fractures in international financial architecture, and fears of deglobalization. Extreme volatility characterizes commodity and financial markets. While the pandemic quickly morphed from a health crisis to one of life and livelihood, the conflict in Europe has the potential to derail the global economy. Caught in the cross-current of multiple headwinds, our approach needs to be cautious but proactive in mitigating the adverse impact on India's growth, inflation, and financial conditions. We are, however, reassured by the strong buffers that we have built over the past few years, including large foreign exchange reserves, significant improvement in external indicators, and substantial strengthening of the financial sector, all of which would help us to weather this storm. Please note that I'm emphasizing on 3 different aspects which places us in a position that would enable us to deal with the emerging crisis and the challenges. The first, significant improvement in the external sector. The second, foreign exchange reserves, which are at very comfortable levels. And third, substantial strengthening of the financial sector. I will be dwelling upon this in detail in the later part of my statement. Once again, we in the Reserve Bank stand resolute and in readiness to defend the economy and navigate out of the current storm. Let me now turn to the decisions and deliberations of the Monetary Policy Committee. Against this backdrop, the Monetary Policy Committee, that is MPC, met on 6th, 7th, and 8th April, and based on an assessment of the macroeconomic situation and the outlook, voted unanimously to keep the policy repo rate unchanged at 4%. The MPC also decided unanimously to remain accommodative while focusing on withdrawal of accommodation to ensure that inflation remains within the target going forward while supporting growth. The marginal standing facility, that is MSF rate and bank rate, remain unchanged at 4.25%. Further, it has been decided by the Reserve Bank to restore the width of the liquidity adjustment facilities, that is the LAF, LAF, that is the LAF corridor, to 50 basis points, 50 to 50 basis points, the position that prevailed before the pandemic. The floor of the corridor will now be provided by the newly instituted Standing Deposit Facility, SDF, which will be placed 25 basis points below the repo rate, that is at 3.75%. I shall explain the details in this regard in the later part of my statement. Let me first dwell upon the MPC's rationale for its decision on the policy rate and the stance. Since the MPC's last meeting in early February 2022, the expected positive benefits from the ebbing of
the Omicron wave have significantly changed. Omicron wave have been offset by the sharp escalation in geopolitical tensions. Let me just read this sentence again. Since the MPC's last meeting in February 2022, the expected positive effects of the Omicron wave, expected positive benefits from the ebbing of the Omicron wave have been offset by sharp escalation in geopolitical tensions. This has significantly changed the external and domestic landscape. Concerns over protracted supply disruptions have rattled global commodity and financial markets. Given the significant share of the two economies engaged in the war in global production and exports of key commodities like oil and natural gas, wheat and corn, palladium, aluminium and nickel, edible oil and fertilizers. Now these are, I have listed out the points which basically are at the root of the concerns over the protracted supply disruptions which are causing all these turbulence and in all these areas. So concerns over protracted supply disruptions have rattled commodity and financial markets. Given the significant share of the two economies engaged in war in global production and exports of key commodities like oil and natural gas, wheat and corn, palladium, aluminium and nickel, edible oil and fertilizers. I repeated this sentence so that there is clarity in, clarity in our communication. Global crude oil prices briefly crossed $130 per barrel, touching their highest level since 2008, and remain volatile at elevated levels despite some recent correction. Global food prices, along with metal and other commodity prices, have also hardened significantly. Risk aversion towards assets of emerging market economies has increased, leading to large capital outflows and depreciating bias in their currencies, that is, currencies of the emerging market economies. These developments have, first, ratcheted up the projections of global inflation, which was already running well above the target in the major countries, and second, will produce sizable adverse impact on output across geographies. The geopolitical tensions have exacerbated at a time when the global economy was grappling with a sharp rise in inflation and consequent monetary policy normalization in major advanced economies. Global supply chain disruptions and input cost pressures are now expected to linger even longer. The resurgence of COVID-19 infections in some major economies in March and the associated lockdowns run the risk of further aggravating the global supply bottlenecks and input cost pressures. World trade and output and hence external demand are likely to be weaker than envisaged 2 months back. Overall, the external developments during the past 2 months have led to materialization of downside risks to domestic growth and upside risks to inflation. And upside risks to the inflation projections that was made during the MPC meeting of February this year. Inflation is now projected to be higher and growth lower than the assessment during February. Economic activity, although recovering, is barely above its pre-pandemic level. Against this backdrop, the MPC decided to retain the repo rate at 4%. It also decided to remain accommodative while focusing on withdrawal of accommodation to ensure that inflation remains within the target going forward while supporting growth. I would now like to provide our assessment of growth and inflation. And first, I would take up growth. According to the second advance estimates released by the National Statistics Office, NSO, on February 28, real GDP rose by 8.9% in 21-22. Private consumption and fixed investment, key drivers of the domestic demand, however, remain subdued, with these two components being only 1.2% and 2% respectively above their pre-pandemic levels. On the supply side, contact-intensive services still trail the 2019-20 level.
Nevertheless, the Indian economy is steadily reviving from its pandemic-induced contraction. During 21-22, weaknesses in economic activity resurfaced in third quarter and got exacerbated by emergence of the Omicron variant in January 2022. A gradual turnaround has been noticed during February, although in March a mixed picture was seen. Some contact-intensive activities have regained traction amidst declining infections and removal of restrictions. Several high-frequency indicators, namely railway freight, GST collections, toll collections, electricity demand, fuel consumption, and imports of capital goods, posted robust year-on-year expansion during the months of February and March. With the easing of restrictions, domestic air passenger traffic rebounded in the month of March. According to our surveys, consumer confidence is improving and households' optimism in outlook for the year ahead has strengthened with an uptick in sentiments. Business confidence is in optimistic territory and supportive of revival in economic activity. On the other hand, passenger vehicle sales and registrations continue to contract, although at a moderating pace. Both manufacturing and services PMIs remain in the zone of expansion. While manufacturing PMI moderated slightly in March, services and composite PMI showed improvement. Going forward, robust Rabi output should support recovery in rural demand, while a pickup in contact-intensive services should help in further strengthening urban demand. Investment activity may gain traction with improving business confidence, pickup in bank credit, continuing support from government capex, and congenial financial conditions. Capacity utilization in the manufacturing sector recovered further to 72.4%, that is 72.4% in third quarter 21-22 from 68.3% in the previous quarter, surpassing the pre-pandemic level of 69.9% in the fourth quarter of 2019-20. As the horizon was brightening up, escalating geopolitical tensions have cast a shadow on our economic outlook. Although India's direct trade exposure to the countries at the epicenter of the conflict is limited, the war could potentially impede the economic recovery through elevated commodity prices and global spillover channels. Further, financial market volatility induced by monetary policy normalization in advanced economies, renewed COVID-19 infections in some major countries with augmented supply-side disruptions and protracted shortages of critical inputs such as semiconductors and chips pose downside risks to the growth outlook. Taking all these into consideration, all these factors that I have just explained in the previous 5 to 6 minutes, taking all these into consideration, real GDP growth for the year 2022-23, that is the current financial year 22-23, is now projected at 7.2%. I repeat, 7.2%, with Q1 22-23 at 16.2%, Q2 at 6.2%, Q3 at 4.1%, and Q4 at 4%, assuming crude oil, that is Indian basket, at $100 per barrel during the year 2022-23. Let me now turn to inflation. In February 2022 meeting of the MPC, we had projected a moderating path of inflation during 22-23. Heightened geopolitical tensions since end February have, however, upended the earlier narrative and considerably clouded the inflation outlook for the year. On the food price front, a likely record Rabi harvest would help to keep domestic prices of cereals and pulses in check. Global factors such as loss of wheat supply from the Black Sea region and the unprecedented high international prices of wheat could, however, put a floor under domestic prices of wheat.
Edible oil price pressures are likely to remain elevated in the near term due to export restrictions by key producers as well as loss of supply from the Black Sea region. Feed cost pressures could continue due to global supply shortages, which could also have a spillover impact on poultry, milk, and dairy product prices. Coming to non-food items, the spike in international crude oil prices since end February poses substantial upside risk to inflation through both direct and indirect effects. Sharp increase in domestic pump prices could trigger broad-based second-round price pressures. A combination of high international commodity prices and elevated logistic disruptions could aggravate input costs across agriculture, manufacturing, and the services sectors. Their pass-through to retail prices, therefore, warrants continuous monitoring and proactive supply management. Financial markets are likely to remain volatile on rising risk premia, dislocations in trade and capital flows, and divergent monetary policy responses across central banks. Taking into account these factors, and on the assumption of a normal monsoon during 2022, and average crude oil price, that is the Indian basket, at US dollar 100 per barrel, 100 per barrel, inflation is now projected at 5.7%. I repeat, inflation is now projected at 5.7% in 2022-23, with Q1 at 6.3%, Q2 at 5%, Q3 at 5.4%, and Q4 at 5.1%. It may, however, be noted that given the excessive volatility in global crude oil prices since late February and the extreme uncertainty over the evolving geopolitical tensions, any projection of growth and inflation is fraught with risk and is largely contingent upon future oil and commodity price developments. In this context, continuation and deepening of supply-side measures may alleviate food price pressures and also mitigate cost push pressures across manufacturing and services. On our part, let me assure all stakeholders that, as in the past, the Reserve Bank will use all its policy levers to preserve macroeconomic stability and enhance the resilience of our economy. The situation is dynamic and fast-changing, and our actions have to be tailored accordingly. I would now like to turn to liquidity and financial market conditions. As stated earlier, the macroeconomic outlook is undergoing tectonic shifts, and our policy response has to be preemptive and recalibrated dynamically to the evolving outlook. The Reserve Bank will continue to adopt a nuanced and nimble-footed approach to liquidity management while maintaining adequate liquidity in the system. Let me again read this statement because it's very important and the communication should be very clear to the market. The Reserve Bank will continue to adopt a nuanced and nimble-footed approach to liquidity management while maintaining adequate liquidity in the system. At present, liquidity management is characterized by two-way operations through variable rate reverse repo auctions, that is VRRR auctions, of varying maturities to absorb liquidity, and variable rate repo auctions, that is VRR auctions, variable rate repo auctions to meet transient liquidity shortages and offset mismatches. This approach will be continued. It may be noted that the interest rate for around 80% of the liquidity absorbed under the LAF during the fourth quarter of 21-22 has firmed up close to the policy repo rate due to the rebalancing of liquidity through our VRRR auctions. Accordingly, financial participants and financial markets have been prepared
for the eventual normalization of the LAF corridor, which we are doing today. So therefore, the normalization of the LAF corridor should not come as a surprise to the market, because we have prepared the market over the last several months, whereby the 80% of the liquidity is being absorbed at a rate close to the repo rate. Further, it has now been decided to fully restore the liquidity management framework instituted in February 2020, albeit with some refinements to enhance its effectiveness. Accordingly, the following measures are being instituted. 1. The amendment to Section 17 of the RBI Act in 2018 empowered the Reserve Bank to introduce the Standing Deposit Facility, that is SDF. By removing the binding collateral constraint on the central bank, the SDF strengthens the operating framework of monetary policy. Accordingly, it has now been decided to introduce SDF as the floor of the LAF corridor. This would provide symmetry to the operating framework of monetary policy by introducing a standing absorption facility at the bottom of the LAF corridor, similar to the standing injection tool at the upper end of the corridor, namely the marginal standing facility. Thus, at both ends of the LAF corridor, you see both ends currently after we have introduced SDF at 3.75. Currently, the LAF corridor, therefore, the 50 basis points corridor is 3.75% SDF at the lower end of the corridor and 4.25% at the upper end of the corridor through the instrumentality of the MSF. So thus, at both ends of the LAF corridor, there will be standing facilities, one to absorb the liquidity and the other one to inject liquidity. SDF absorbs liquidity, MSF would inject liquidity, and this will depend on the evolving financial market conditions. It can vary from day to day also. Accordingly, access, and further, this is very important to note, that access to SDF and MSF will be at the discretion of the banks, because they are standing facilities. They will be at the discretion of the banks, unlike repo, reverse repo, OMO and CRR, which are available at the discretion of the Reserve Bank. So the standing facilities give the discretion to the banks. And the other tools I mentioned, the OMO, the reverse repo, or the CRR actions, if any, they are at the discretion of the Reserve Bank. Notably, and this is very important to note, that SDF is also a financial stability tool in addition to its role in liquidity management. So the introduction of SDF is for twin objective of doing proper and appropriate liquidity management in the current context, and also to further strengthen financial stability. So it has two broad objectives. The second point, I mentioned that there are, we are instituting several measures. The first one I have said. The second point is as follows. The SDF rate will be 25 basis points below the policy rate, and it will be applicable to overnight deposits at this stage. It would, however, retain the flexibility to absorb liquidity of longer tenors as and when the need arises with appropriate pricing. The MSF rate will continue to be 25 basis points above the repo rate. Thus, the width of the LAF corridor is restored to the pre-pandemic configuration of 50 basis points symmetrically around the policy repo rate, which will be at the center of the corridor. 3. The third announcement. The fixed rate reverse repo, that is FRRR, if I can put it that way. The fixed rate reverse repo FRRR rate is retained at 3.35%. It will remain as part of RBI's toolkit. However, its operation will be at the discretion of the Reserve Bank for purposes to be specified from time to time. The FRRR, that is fixed rate reverse repo, along with the SDF, will impart flexibility to RBI's liquidity management framework. 4. Both MSF and SDF will be available from 17:30 hours to 23:59 hours on all days of the week throughout the year, from 5:30 p.m. to
to 11:59 p.m. on all days of the week throughout the year, irrespective of holidays or Saturdays or Sundays. 5. It has been decided to restore the opening time of financial markets regulated by the Reserve Bank to the pre-pandemic timing of 9 a.m., that is 9 in the morning, with effect from 18th April without any change in their closing time prevailing at present. During the pandemic, now these are some of the announcements I made. I will now proceed on. During the pandemic, the Reserve Bank offered liquidity facilities of the order of rupees 17.2 lakh crore, of which 11.9 lakh crore was utilized. So far, 5 lakh crore has been returned or withdrawn on the lapse of various facilities on their due dates. The extraordinary liquidity measures undertaken in the wake of the pandemic, combined with liquidity injected through various other operations of the Reserve Bank, have left a liquidity overhang in the order of about rupees 8.5 lakh crore in the system. The RBI will engage in gradual, calibrated withdrawal of this liquidity over a multi-year time frame in a non-disruptive manner beginning this year. I'll repeat this sentence. The Reserve Bank will engage in gradual and calibrated withdrawal of this liquidity over a multi-year time frame in a non-disruptive manner beginning this year. The objective is to restore the size of the liquidity surplus in the system to a level consistent with the prevailing stance of monetary policy. While doing so, I would like to reiterate our commitment to ensure the availability of adequate liquidity to meet the productive requirements of the economy. We also remain focused on completion of the borrowing program of the government, and towards this end, the Reserve Bank will deploy various instruments as warranted. I would now like to focus on the external sector. Despite the worsening global supply shocks slowing the recovery in the world economy, India's merchandise exports grew robustly in 2021-22, overshooting the target of $400 billion. A sharp escalation in international commodity prices in conjunction with domestic demand recovery has also led to strong rebound in imports and a widening of trade and current account deficits. The sustained and robust growth in the services exports and inbound remittances continue to keep our invisible account in large surplus, which helps to offset partly the merchandise trade deficit. Despite the sharp jump in crude oil prices and other commodity prices, we expect the current account deficit to remain at sustainable levels, which can be financed with normal capital flows. Overall, our external sector indicators remain healthy and have improved significantly in the recent years. Our foreign exchange reserves stand at 606.5 billion as on 1st April, which are further bolstered by the net forward assets of the Reserve Bank. The Reserve Bank remains committed to maintain orderly conditions in the domestic financial markets and will take appropriate steps as needed on ongoing basis to contain the adverse spillovers from the global developments. I would now like to announce certain additional measures. There are, I think, 6 or 7 announcements, and I shall be quick. First announcement relates to individual housing loans, rationalization of risk weights. The risk weights for individual housing loans were rationalized in October 2020 by linking them only with loan-to-value ratios for all new housing loans sanctioned up to 31st March 2022. Recognizing the importance of housing sector and its multiplier effects, it has been decided to extend the applicability of these guidelines till 31st March 2023. This will facilitate higher credit flow for individual housing loans. The next announcement relates to SLR holdings in the HTM category. With a view to enable the banks to better manage their investment portfolio during 2022-23, it has been decided
to enhance the present limit under held to maturity, that is HTM category, from 22% to 23% of the NDTL till 31st March 2023. It has also been decided to allow banks to include eligible securities, that is eligible SLR securities acquired between 1st April 2022 and 31st March 2023 under this enhanced limit. The HTM limits would be restored from 23% to 19.5% in a phased manner starting from the quarter ending June 30th, 2023. Next announcement relates to discussion paper on climate risk and sustainable finance. Climate change poses certain risks that could have implications for the safety and soundness of financial institutions as well as financial stability. To facilitate better understanding and assessment of the potential impact of climate-related financial risks by the regulated entities of RBI, a discussion paper on climate risk and sustainable finance will be published shortly for feedback. Next relates to Committee for Review of Customer Service Standards in RBI regulated entities. The Reserve Bank has over the years taken a number of measures to enhance consumer protection. These measures include laying down regulatory frameworks on customer service, internal grievance redress mechanism, and the ombudsman mechanisms. In view of the transformation underway in the financial landscape due to innovations in products and services, deepening of penetration and emergence of various, deepening of the digital penetration and emergence of various service providers, it is proposed to set up a committee to examine and review the current state of customer service in all the RBI regulated entities. And this committee will focus on adequacy of customer service regulations which are prevalent at present and will suggest measures to improve them in the future. Next announcement relates to interoperability in cardless cash withdrawal, that is interoperable cardless cash withdrawal at the ATMs. At present, the facility of cardless cash withdrawal through ATMs is limited only to a few banks. It is now proposed to make cardless cash withdrawal facility available across all banks and ATM networks using the UPI. In addition to enhancing ease of transactions, the absence of the need for physical card for such transactions would help prevent frauds such as card skimming, card cloning, etc. Next announcement relates to Bharat Bill Payment System, rationalization of the net worth requirement for the operating units. The Bharat Bill Payment System, BBPS, an interoperable platform for bill payments, has seen an increase in volume of bill payments and billers over the years. To further facilitate greater penetration of bill payments through the BBPS and to encourage participation of a greater number of non-bank Bharat Bill Payment operating units in this system, it is proposed to reduce the net worth requirement of such entities from Rs 100 crore to Rs 25 crore. Next announcement, and that's the last announcement before, and after that I would just proceed to conclude and give some broad messages for the coming period. The next announcement relates to cyber resilience and payment security controls of payment system operators. Payment systems play a catalytic role in facilitating financial inclusion and promoting financial stability. To ensure that our payment systems remain resilient to conventional and emerging risks, specifically those relating to cyber security, it is proposed to issue guidelines on cyber resilience and payment security controls for payment systems, for payment system operators. I would now like to conclude. The last 2 years have seen turbulence and uncertainty of epic proportions. At the Reserve Bank, we have worked unrestingly to mitigate their impact on our economy. When I look back, I see that we have traversed an arduous path with candor, courage, and conviction that a brighter future lies ahead. The conflict in Europe now poses a new and overwhelming challenge,
complicating an already uncertain global outlook. As the daunting headwinds of the geopolitical situation challenge us, the Reserve Bank is braced up and prepared to defend the Indian economy with all instruments at its command. As we have demonstrated over the last 2 years, we are not hostage to any rule book, and no action is off the table when the need of the hour is to safeguard the economy. Our goals of price stability, sustained growth, and financial stability are mutually reinforcing, and we continue to be guided by this approach. The sky today may be overcast with clouds, but we will use all our energies, resolve, and resources to let the sunlight illuminate India's future. Let me end by recalling what the father of our nation, Mahatma Gandhi, had said long ago. It is faith that steers us through stormy seas, faith that moves mountains, and faith that jumps across the ocean. Thank you. Stay safe, stay well. Namaskar. तो अभी आप ये सीधी तस्वीर देख रहे थे जहां आरबीआई की तरफ से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इसमें बहुत सारी जो नीतिगत मौद्रिक नीति की बातें की गई। बड़ी खबर ये, बड़ी बात ये कि कोई बदलाव नहीं किया गया है, मौद्रिक नीति में कोई बदलाव नहीं किया गया है। रेपो रेट 4% पर ही बरकरार रखा गया है और कैश रिजर्व रेशियो CRR की बात की जाए उसे भी 4% पर बरकरार रखा गया। हालांकि रिवर्स रेपो रेट को 0.40% की उसमें बढ़ोतरी करके अब इसे 3.25% पे लाया गया। हमारे साथ हमारी सहयोगी श्यामा भी इस वक्त मुंबई से जुड़ गई हैं। श्यामा, जिस बात का जिक्र आरबीआई के गवर्नर ने कहा, उन्होंने ये कहा कि हमने इस बार अकोमोडेटिव रुख रखा है, कैसे इसको समझा जाए? जी देखिए, जब हम बात करते हैं कि कोई बदलाव नहीं होने वाले थे और ये इसकी उम्मीद भी थी, एक्सपेक्टेड था, ये एक्सपेक्टेड लाइंस पे था, बिल्कुल उसी तरीके से किया गया है। यहाँ पर कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन कुछ सेक्शन ऑफ एक्सपर्ट्स ये मान रहे थे कि अकोमोडेटिव स्टांस में बदलाव हो सकता है, उसे न्यूट्रल किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर भी कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। यानी कि जिस तरीके से पहले बताया गया था, अकोमोडेटिव स्टांस तब तक रहेगा जब तक ग्रोथ के लिए नेसेसरी रहेगा। जिस तरीके से भी सिचुएशन होगा उस तरीके से उसे उस हिसाब से उसे बदलाव किया जाएगा। इसे अकोमोडेटिव स्टांस माना जाता है। तो अभी अकोमोडेटिव स्टांस में भी कोई बदलाव नहीं आया है, लेकिन जिस तरीके से इन्फ्लेशन या जियोपॉलिटिकल स्ट्रेस जो बना हुआ है, ये माना जा रहा था कि ग्रोथ प्रोजेक्शन होगा और साथ ही इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन जो होगा उसमें ज़रूर बदलाव होगा। और यहाँ पर हमने ये चीज़ ज़रूर देखी कि जो ग्रोथ प्रोजेक्शन था वो पहले जो पिछली बाई मंथली पॉलिसी थी यानी कि फेब में उसे 7.8% था वो पहले, लेकिन अब उसे 7.2 कर दिया गया है, यानी कि लोअर कर दिया गया है। साथ ही इन्फ्लेशन की जब हम बात करें तो इन्फ्लेशन जो है अभी भी आरबीआई के टारगेट रेंज से यानी कंफर्टेबल रेंज से बाहर है, 6% के ऊपर है। तो इसका भी इन्फ्लेशन जो टारगेट है या इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन है उसे बढ़ा दिया गया है। तो ये पहले 5.3 था जब हम फरवरी की बात कर रहे हैं, अब हम जब बात कर रहे हैं तो ये 5.7 कर दिया गया है। साथ ही हमने ये भी बताया था जब हम पहले बात कर रहे थे कि किस तरीके से गवर्नर अपनी स्टेटमेंट देंगे, जियोपॉलिटिकल टेंशंस के बारे में बात करेंगे या जो बढ़ती महंगाई है उस पर बात करेंगे, तो गवर्नर ने ये सारे ही बिंदुओं को छुआ है, इन सभी पे बात किया है। और साथ ही ये भी बताया है कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी जो है वो स्ट्रांग है, लेकिन जो ये वॉर हो रहा है यूरोप में हो रहा है, भले ही एपी सेंटर जो कंट्रीज़ हैं वो इंडिया नहीं है या वो अफेक्टेड नहीं होगा ज़्यादा, लेकिन वॉर की वजह से डेफिनेटली यहाँ पर भी उसका जो एक तरीके से रिपल्स होगा वो ज़रूर आएगा। क्योंकि हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे जो सप्लाईज़ हैं, निकल की बात की उन्होंने, पलेडियम की बात की, फ्यूल की बात की, एडिबल ऑयल की बात की, ये सभी जो चीज़ें हैं वो प्रोट्रैक्टेड सप्लाई हुआ है और इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इसका जो एक तरीके से हम कह रहे हैं इम्पैक्ट है वो इंडिया में देखने के लिए मिल रहा है। साथ ही लिक्विडिटी के ऊपर बात की हमने, क्योंकि समय अब यहाँ पर अनुकूल हो रहा है। हमने बात की कि जो थर्ड वेव है कोविड का वो कहीं ना कहीं कम होता हुआ दिख रहा है सभी जगहों पर। सभी राज्यों की बात करें तो वो कहीं ना कहीं सामान्य होता हुआ नज़र आ रहा है और इसीलिए जो हम प्री कोविड का जो समय था वैसे तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन कोविड जब
शुरू हुआ था या पीक पर था और जिस तरीके से गवर्नर ने या आरबीआई ने काफ़ी सारे मेजर्स लिए थे उसे अब धीरे धीरे पीछे लेने का समय आ गया है। और ये भी गवर्नर ने बताया कि इसे जो एक तरीके से 17.2 लाख करोड़ एक तरीके से दिया गया था, एक हम कह सकते हैं पैकेज दिया गया था या लिक्विडिटी की बात करें, उसे अब धीरे धीरे जो अनयूज होगा उसे ग्रेजुअल तरीके से एक वापस लेने की प्रक्रिया शुरू होगी। और ये बताया गया कि इसे कैलिब्रेटेड तरीके से, ग्रेजुअल तरीके से, धीरे तरीके से ओवर द इयर्स, यानी कि ये एक ही बार में नहीं किया जाएगा, मल्टी फ्रेम एक तरीके से जहां पर कोई अफेक्ट ना हो, यहाँ कोई भी प्रोसेस डिस्ट्रेस ना हो, उस तरीके से उसे पीछे लिया जाएगा। ओएमओस की बात कर लीजिए या एसडीएफ, एमएसएफ, ये सभी जो एक तरीके से हम कह रहे हैं कि इंस्ट्रूमेंट्स हैं लिक्विडिटी को कंटिन्यू करने के लिए भी, साथ ही बैलेंस करने के लिए ये सारे मेजर्स की भी जिक्र उन्होंने की है। साथ ही फाइनेंशियल मार्केट्स की हम बात करें तो वो भी अब नॉर्मल टाइम पे अपने रिस्टोर हो रहा है। इसके अलावा कैश जो कार्ड के विदा आप पैसे निकालने का जो प्रोसेस है वो भी अब काफ़ी सारे एटीएम्स में और बैंक ब्रांचेस में अवेलेबल कराया जाएगा। तो मोटा मोटी हम बात कर रहे हैं कि स्टेटस को मेंटेन किया गया है, अकोमोडेटिव स्टैंस यहाँ पर रखा गया है, दरों में बदलाव नहीं की गई है, साथ ही जो भी जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं उस पर भी गवर्नर ने बात किया है। और हर बार की तरह जैसे हम देखते हैं कि गवर्नर महात्मा गांधी के एक कोट से एंड करते हैं, आज भी उन्होंने यही कहा कि भले ही अभी हमें दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा कोहरा है या क्लाउड्स है, लेकिन भारत का जो सूरज है वो चमकता हुआ जरूर नजर आ रहा है यहाँ पर। हमारे साथ बने रहिए श्यामा। हमारे साथ इस वक्त बहुत ही खास मेहमान, वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार शुभमय भट्टाचार्य जी इस वक्त जुड़ गए। सर, आपका स्वागत है, नमस्कार। और जैसा कि मैंने ये सवाल पूछा श्यामा से भी कि आरबीआई ने इस बार भी अकोमोडेटिव रुख ही, स्टांस ही अपनाया है, क्या कुछ इसके संकेत, क्यों इस स्टांस को आरबीआई ने अडॉप्ट किया इस बार? मैं एक चीज बताऊंगा आपको कि आप अगर आरबीआई गवर्नर श्री शक्तिकांत दास जी का स्टेटमेंट सुने केयरफुली, उन्होंने कहा है विथड्रॉल ऑफ एकोमोडेटिव स्टांस, विथड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन, मतलब न्यूट्रल स्टैंड की तरफ। बिल्कुल, इसमें और ये चीज बिल्कुल ही उन्होंने सही कहा है। आप ये इस डिफरेंस को हम थोड़ा इस तरह से समझे कि आरबीआई कह रहा है कि ग्रोथ के ऊपर अंकुश लगा हुआ है और अभी जो यूरोप में जो लड़ाई छिड़ गया है उससे और भी ज्यादा प्रेशर्स बने हुए हैं, जिस पर उन्होंने काफी देर तक उन्होंने एक्सप्लेन किया। साथ में उन्होंने ये भी बताया कि इसके चलते उन्होंने 2 नंबर, क्रिटिकल नंबर्स उन्होंने हमें पेश किए। जो ग्रोथ रेट इंडियन जीडीपी का वो 7.2% का इस साल के लिए, यानी कि इस वित्तीय साल के लिए उन्होंने दर्शाया। ये उनका आरबीआई का ही पहले का जो नंबर था 7.8%, उससे कम है। यानी कि आरबीआई का मानना है कि इस साल ग्रोथ पे कुछ इस वजह से भारत के अंदरूनी अर्थनीति नहीं, लेकिन बाहर के जो आने वाले प्रेशर्स हैं उससे ये फर्क आएगा। दूसरा, इन्फ्लेशन, जिस पर आरबीआई बने हुए थे 4.5% के एनुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन पे, वो बढ़ के 5.7%। ये काफी बड़ा फर्क है और ये आरबीआई को करना पड़ा है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को जो एक्सपर्ट्स भी टिप्पणी दे रहे थे कि ये जिस तरह से चारों तरफ विदेशों से आने वाले कमोडिटी प्राइसेस, तेल का, इन सब के वजह से भारत में अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति का फिर से वो थोड़ा बहुत प्रेशर आ गया है। और आरबीआई के गवर्नर ने शक्तिकांत दास जी ने फिर से ये भी बताया कि उनका भी प्रोजेक्शन है ना कि $75 पर बैरल, यानी बट $100 पर बैरल के हिसाब से वो चल रहे हैं। इस साल $100 बैरल का ऑयल का दाम रहेगा। तो इन सब चीजों को देखते हुए इसलिए उन्होंने वो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट किया कि विथड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन, यानी कि हम प्रस्तुत हैं, हम ग्रोथ को सहायता करेंगे, लेकिन साथ में जो लिक्विडिटी का जो विस्तृत क्षेत्र बन गया था उसको हमें कुछ हद तक उस पर अंकुश लगाना पड़ेगा। सर, चूंकि आरबीआई ने अपने ही स्टैंड से जो 7.8 का उन्होंने विकास का अनुमान जताया था जीडीपी का, उसको कम करके 7.2 का 2022-23 के लिए अनुमान जताया है। एक तरफ तो आरबीआई इस अनुमान को घटा के 7.2 पे ला दिया है, दूसरी तरफ आरबीआई का यह कहना कि हम विड्रॉल ऑफ अकोमोडेटिव स्टांस, क्या नहीं लगता है कि आपको
थोड़ा विरोधाभास है दोनों के बीच में? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका कहना है विथड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन ग्रोथ के से लेना जरूरी नहीं है। उनका कहना है कि इस ग्रोथ को जितना है इस पर रखने के लिए, इसको इस तेजी को बरकरार रखने के लिए आप अभी भी देखिए भारत का ग्रोथ रेट वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फास्टेस्ट ग्रोथ रेट है। इसको चलाने के लिए, इसके पीछे पुश देने के लिए जरूरत है कि मुद्रास्फीति पर अंकुश रहे। गरीबों पर, सबके ऊपर मुद्रास्फीति का वार बहुत जोर से आता है। इसलिए ग्रोथ के जो प्रोसेस है उसको बरकरार रखने के लिए फिलहाल तक आरबीआई ने जो मुद्रास्फीति को सामने रखने पर भी एक जिसे कहते हैं सॉफ्ट अप्रोच स्लाइटली दिए थे कि भाई चल सकता है क्योंकि ग्रोथ बढ़ता ही जा रहा है। क्योंकि इस वक्त ग्रोथ पर थोड़ा बहुत अंकुश लग रहा है विदेशी डेवलपमेंट से, इसीलिए इन्फ्लेशन के ऊपर और कड़ी नजर रखनी पड़ी। और इसीलिए जो एकोमोडेशन है, यानी कि जो एकोमोडेशन का मतलब क्या कि लोगों की सारे जगहों पर सॉफ्ट कैश है, इजी लिक्विडिटी, इजी इंटरेस्ट रेट का जो एक माहौल था उस पर वो अंकुश रखेंगे। लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है जैसे हाउसिंग लोन, इंडिविजुअल हाउसिंग लोन्स, इस पर उनका जो सॉफ्ट अप्रोच बना हुआ है वो बना रहेगा। और ये मिडिल क्लास के लिए बहुत जरूरी है। साथ में बाकी सारी जो स्टेप्स लिए गए हैं स्मॉल इनकम ग्रुप्स के लिए, उनके लिए जो फैसिलिटीज हैं उनमें कोई बढ़ोतरी, उनमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। ठीक है सर, समय इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण बातों को हमारे साथ साझा करने के लिए। शुभम भट्टाचार्य और हमारे साथ हमारी सहयोगी श्यामा, आपका भी मुंबई से हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों ही का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बढ़ेंगे आगे और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। सनफ्लेम होम अप्लायंसेज, सबकी पहली पसंद। सनफ्लेम, द क्लियर चॉइस। ओए देख, पवन आ गया। पवन, वहाँ क्यों बैठा है? तुझे उसे टीबी है। लास्ट बेंच का मजा अकेले अकेले। पता है ना मुझे टीबी है। चल चल, तुझे पता है ना इलाज का असर शुरू होने के बाद टीबी के इन्फेक्शन का डर नहीं रहता। टिफिन में क्या है? टीबी की दवाई के साथ खाना भी अच्छे से लेना है, समझा? अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? और ब्रेक बाद आपका फिर से स्वागत है। डीडी फ्री डिश ने अपने विकास की रफ्तार को बरकरार रखा है। डीडी फ्री डिश की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। एंटरटेन टीवी प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक मनीष सिंघल ने डीडी फ्री डिश की लोकप्रियता बढ़ने पर खुशी का इजहार किया है। मेरे हिसाब से क्वालिटी ऑफ कंटेंट, गुड कंटेंट अवेलेबल है डीडी फ्री डिश के ऊपर। और मुझे लगता है कि फ्री मार्केट ग्रो होगा। मार्केट तो मतलब ओवरऑल पे मार्केट इज ग्रोइंग, बट फ्री मार्केट ज्यादा ग्रो होगा कंपेयर टू पे मार्केट। और बहुत कॉम्पैक्ट और गुड कंटेंट अवेलेबल है डीडी फ्री डिश के ऊपर, तो डेफिनेटली उसका फायदा तो मिल ही रहा है डीडी फ्री डिश को और उसमें जो भी अवेलेबल ब्रॉडकास्टर्स हैं। और यहाँ रुके एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। सनफ्लेम होम अप्लायंसेज, सबकी पहली पसंद। सनफ्लेम, द क्लियर चॉइस। आज़ादी के बाद लंबे वक्त तक देश की एक बहुत बड़ी आबादी मूलभूत स्वास्थ्य समस्याओं से वंचित रही थी और समाज के वंचित तबके से आने वाले 50 करोड़ से अधिक लोगों के पास किसी तरह का कोई स्वास्थ्य कवर नहीं था। लेकिन केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के जरिए ऐसे सभी लोगों को सहारा देने का काम किया है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लक्ष्य देश के 50 करोड़ नागरिकों को स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करना है। साथ ही ये योजना लाभार्थियों को 5 लाख रुपए की औसत कवरेज राशि भी प्रदान करती है, जिसमें इलाज के साथ ही दवाओं और अस्पताल में भर्ती होने का खर्चा भी शामिल है। आइए देखते हैं ये ग्राउंड रिपोर्ट। देश के गरीब से गरीब व्यक्ति को, सामान्य जन को आरोग्य की सुविधा मिले, इसलिए गंभीर बीमारियों के लिए और बड़ी अस्पतालों में सामान्य मानवी को भी आरोग्य की सुविधा मिले, मुफ्त में मिले। और इसलिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री
जन आरोग्य अभियान प्रारंभ करने का तय किया है। भारत में हर साल गंभीर बीमारियों के महंगे इलाज पर अपनी कमाई खर्च करने के कारण लाखों परिवार गरीबी की रेखा के नीचे चले जाते थे। इसे समझते हुए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने इस मर्ज का इलाज किया। केंद्र सरकार ने आम आदमी तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने को लेकर दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना को लॉन्च किया, जिसके अंतर्गत सरकार आम आदमी तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने को लेकर प्रतिबद्ध है। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना निजी और सरकारी दोनों ही अस्पतालों में कैशलेस उपचार प्रदान करती है। आइए देखते हैं आयुष्मान योजना में क्या कवर किया जाता है। प्री हॉस्पिटलाइजेशन 15 दिनों के लिए कवर किया जाता है। यह योजना दवाइयों के लिए भी कवरेज प्रदान करती है। इस योजना में डॉक्टर का परामर्श शुल्क और चिकित्सकीय जांच और उपचार शुल्क भी शामिल हैं। रेवाड़ी जिले में करीब हमारे 2,05,000 लाभार्थी हैं, जिसमें से 85,000 के कार्ड बन चुके हैं, जो अपने आयुष्मान का गोल्डन कार्ड ले भी चुके हैं। और जिन्होंने मरीजों ने ट्रीटमेंट लिया है वो करीब 10,000 लाभार्थियों ने ट्रीटमेंट भी ले लिया और इसका लाभ भी ले लिया है आयुष्मान में, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें 5 लाख रुपए तक की राशि 1 साल में प्रति परिवार बिल्कुल मुफ्त है। प्रधानमंत्री ने आयुष्मान योजना चलाई है, बहुत अच्छी योजना है। मैंने भी अपना इसमें इलाज करवाया है और ये योजना प्रधानमंत्री को चलानी चाहिए, और मैं प्रधानमंत्री का इसमें धन्यवाद करता हूँ। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का प्राथमिक लक्ष्य भारत के 50 करोड़ नागरिकों को स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करना है। यह लाभार्थियों को 5 लाख रुपए की औसत कवरेज राशि प्रस्तावित करती है। देश के 10 करोड़ परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने वाली यह देश की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है। 10 करोड़ परिवारों में लगभग 8 करोड़ परिवार ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित हैं, जबकि शेष शहरी क्षेत्रों से आते हैं। आयुष्मान भारत योजना कोरोना काल में वरदान साबित हुई है। इस योजना ने समाज के वंचित तबके तक आधुनिकतम स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचाने का काम किया है। हर गरीब परिवार के लिए निःशुल्क और उत्तम इलाज ही इस योजना का मूल लक्ष्य है। हम गरीब आदमी हैं जी, हमारे पास पैसे पूसे नहीं थे, लड़के के लग गई थी, तो हमने आपकी योजना से वो जो आपका कार्ड बनवाया था उसकी हेल्प से हमने अपने इलाज करवाया लड़के। जो प्रधानमंत्री द्वारा जो आयुष्मान योजना चलाई गई है वो बहुत ही अच्छी योजना है। मैंने मेरा भाई का इलाज भी करवाया, पथरी का इलाज करवाया था रेवाड़ी में ही प्राइवेट हॉस्पिटल में, जो मेरा फ्री में इलाज हुआ है। मैं प्रधानमंत्री का धन्यवाद करता हूँ। इस योजना से गरीब परिवारों को बहुत ही लाभ मिला है। इस योजना के आने से पहले तक आलम यह था कि ज्यादातर गरीब लोग इलाज के अभाव में या तो दम तोड़ देते थे या स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अस्पताल के चक्कर काटते रहते थे। इन सब में कई लोगों की उम्र ही बीत जाती थी, लेकिन सही इलाज कभी नहीं मिल पाता था। लेकिन आज निर्धन परिवारों को इन सारी समस्याओं से छुटकारा मिल चुका है। सही मायने में पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा लाई गई आयुष्मान भारत योजना अब वंचितों और गरीबों के लिए वरदान साबित हो रही है। डीडी न्यूज के लिए रेवाड़ी से प्रीतम सिंह के साथ योगेश कुमार की रिपोर्ट। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। सनफ्लेम होम अप्लायंसेज, सबकी पहली पसंद। सनफ्लेम, द क्लियर चॉइस। बाढ़ ने मचाई तबाही, गांव हुआ तहस नहस। पहल करो, शुरुआत करो, जब करो तो पक्की बात करो। जब पैर तले से दिन गुजरे, सर के ऊपर से रात चले, तामीर करे नगरी नगरी, जब कारीगर का हाथ चले। वंडर सीमेंट, जब दिल में हो जज्बात तभी होती है एक परफेक्ट शुरुआत। हर दिन बदलती दुनिया, हर पल बनती नई खबरें, खबरें जिनसे सरोकार है आपको, खबरें जो रोज जगाती हैं आपको। ताजा और वास्तविक समाचारों से दिन की सही शुरुआत डीडी न्यूज के साथ।
नया सवेरा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। दिन भर की हर अहम खबर को समेटे डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो न्यूज नाइट, जहां होती है देश दुनिया से लेकर खेल और बिजनेस की सुर्खियां। हर बड़ी कवरेज पर ग्राउंड जीरो पर तैनात हमारे संवाददाताओं की आंखों देखी। खासतौर पर पीएम मोदी की मुलाकात, बड़ी खबर पे हम करेंगे चर्चा। बड़ी खबरों पर विशेषज्ञों के साथ विस्तृत चर्चा, सटीक खबर, भरोसेमंद खबर और पैनी नजर। खबर ही नहीं, खबर का विश्लेषण कब्जा करना। देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। आरबीआई ने की मौद्रिक नीति की घोषणा, प्रमुख दरों में नहीं किया कोई बदलाव। रेपो रेट 4% बरकरार, जबकि रिवर्स रेपो रेट बढ़कर हुआ 3.75%। CRR 4% पर स्थिर। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने पूरे किए 7 साल। वित्त मंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई योजना सबका साथ सबका विकास की सच्ची भावना का प्रतीक। मुद्रा लाभार्थियों को दी बधाई। केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज जयपुर में 8 राज्यों और 3 संघ शासित प्रदेशों के साथ एक क्षेत्रीय सम्मेलन की करेंगे अध्यक्षता। जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन के तहत हासिल प्रगति की होगी समीक्षा। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद से रूस हुआ निलंबित। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में रूस को निलंबित करने पर वोटिंग से किया किनारा। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि TS तिरुमूर्ति ने कहा, भारत शांति, संवाद और कूटनीति का रहा है पक्षधर। इमरान खान की बड़ी मुश्किलें। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर फैसले को बताया गैर संवैधानिक। पाक नेशनल असेंबली को किया बहाल। इमरान खान ने आज बुलाई कैबिनेट बैठक, कल अविश्वास मत का करेंगे सामना।
कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु और किदाम्बी श्रीकांत ने सेमीफाइनल में किया प्रवेश। पीवी सिंधु ने थाईलैंड की बुसानन को दी मात, वहीं श्रीकांत ने कोरिया के सन वॉन को हराया। आईपीएल में आज पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच होगा मुकाबला। कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने लगाई जीत की हैट्रिक, दिल्ली कैपिटल्स को दी 6 विकेट से मात। दिल्ली कैपिटल्स की लगातार दूसरी हार। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज, आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने नए वित्त वर्ष की पहली बैठक में रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। हालांकि रिवर्स रेपो रेट को 0.40% तक बढ़ाया गया है। रेपो रेट 4% पर जस का तस है, जबकि रिवर्स रेपो रेट बढ़कर 3.75% हो गया है। आरबीआई गवर्नर ने कहा है कि सभी सदस्यों की सहमति से दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। The Monetary Policy Committee, that is MPC, met on 6th, 7th and 8th April, and based on an assessment of the macroeconomic situation and the outlook, voted unanimously to keep the policy repo rate unchanged at 4%. The MPC also decided unanimously to remain accommodative while focusing on withdrawal of accommodation to ensure that inflation remains within the target going forward while supporting growth. और वहीं आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष में देश की आर्थिक वृद्धि दर बढ़िया रहने का अनुमान जताया है। ये पहली तिमाही में 16.2%, दूसरी तिमाही में 6.2%, तीसरी तिमाही में 4.1% और चौथी तिमाही में 4% रह सकती है। जबकि पूरे वित्त वर्ष 2022 से 23 में देश की आर्थिक वृद्धि दर 7.2% रहने का अनुमान है। Inflation is now projected at 5.7%. I repeat, inflation is now projected at 5.7% in 2022-23, with Q1 at 6.3%, Q2 at 5%, Q3 at 5.4%, and Q4 at 5.1%. तो मौद्रिक नीति की ये घोषणा हो चुकी है और मुंबई से हमारे साथ हमारी सहयोगी श्यामा हमारे साथ जुड़ रही हैं। श्यामा का रुख करते हैं। श्यामा, अगर हम देखें इस पूरे जो हमने सुना है और ये पूरी कॉन्फ्रेंस को अगर हम सुने, साफ तौर पर तमाम जो बड़ी बातें अगर आसान भाषा में उसे समझना हो तो लोगों तक ये बात कैसे पहुंचाई जाए और किस तरह से आसान भाषा के जरिए क्या बड़ी बातें रहीं इस पूरे, अगर हम कॉन्फ्रेंस को देखें तो क्या बड़ी बातें इसमें निकल कर सामने आ रही हैं और किस तरह की जानकारियाँ आपके पास हैं? देखिए गौरव, पॉइंटर्स में इसे हम ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहले तो ये एक्सपेक्टेड था कि यहाँ पर कोई बदलाव नहीं होगा, तो उसी तरीके से शक्तिकांता दास जो गवर्नर हैं भारतीय रिजर्व बैंक के, उन्होंने बताया कि यहाँ पर दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन रिवर्स रेपो रेट में यहाँ पर बदलाव हुआ है। साथ ही ये भी एक सेक्शन ये मान रहा था कि अकोमोडेटिव स्टांस को यहाँ पर बदल के न्यूट्रल किया जा सकता है, लेकिन यहाँ बदलाव ज़रूर हुआ लेकिन न्यूट्रल नहीं किया गया है, इसे मोर अकोमोडेटिव किया गया है। यानी कि अब जो फोकस होगा वो अकोमोडेशन पे होगा, यानी कि जिस तरीके से सिचुएशन होगा भारतीय रिजर्व बैंक उस तरीके से अपने पॉलिसी को ढाल सकता है, बदल सकता है। इसके अलावा हमने ये भी बात की थी कि बाहर की यानी कि जियोपॉलिटिकल जो टेंशन है, यानी कि नॉन डोमेस्टिक जो फैक्टर्स हैं, उसकी वजह से यहाँ देश में क्या असर हो रहा है और किस तरीके से यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ सकता है, उस पर गवर्नर का स्टेटमेंट देखने वाली बात होगी। और उसी बात पर, उसी लाइंस पर गवर्नर ने ये बताया है कि प्रोट्रैक्टेड सप्लाई की वजह से बहुत सारे जो चीज़ें हैं, फ्यूल की बात कर लीजिए, निकल की बात कर लीजिए, पैलेडियम की बात कर लीजिए, एडिबल ऑयल की बात कर लीजिए, इन सब चीज़ों की वजह से यहाँ पर असर होता हुआ दिख रहा है। साथ ही जो फ्यूल की बात कर रहे हैं वो भी इंक्रीज रेट्स पे जा चुका है। खाद्य पदार्थ की हम बात करें तो वो भी उसकी भी दरें यहाँ पर महंगी होती हुई नज़र आ रही है। ये सब इंटरनेशनल जो फैक्टर्स हैं उसकी वजह से। तो यहाँ पर गवर्नर ने ये बताया कि जियोपॉलिटिकल जो टेंशन है, वॉर की बात करें, एक तरफ से जियोपॉलिटिकल टेंशन भी इम्पैक्ट कर रहा है, और वॉर की बात करें तो जो यूरोप में क्राइसिस चल रहा है, एपिसेंटर कंट्रीज़ का अलग है, लेकिन वॉर का असर यहाँ पर भारत में आता हुआ ज़रूर नज़र आ रहा है। इसके अलावा भारतीय यानी डोमेस्टिक इन्फ्लेशन की बात करें तो वो भी कंफर्ट रेंज से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बाहर जाता हुआ नजर आ रहा है।
और ये लगातार हो रहा है। हम देख रहे हैं कि 6% के ऊपर इन्फ्लेशन की दरें अभी फ़िलहाल मौजूद है। इसकी वजह से जो इन्फ्लेशन का दर है वो प्रोजेक्शन को बदल दिया गया है और 4.5 जो पहली जो परसेंटेज बनाया गया था पिछली बार, वो उसे अब चेंज करके 5.7 कर दिया गया है, यानी कि इन्फ्लेशन के एवरेज को बढ़ा दिया गया है। साथ ही जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है उसे यहाँ पर कम कर दिया गया है। पिछली बार हमने देखा था कि 7.8% था, लेकिन इस बार इसे 7.2% कर दिया गया है। तो ग्रोथ प्रोजेक्शन को लोअर कर दिया गया है और जो इन्फ्लेशन का प्रोजेक्शन है उसे हायर कर दिया गया है, क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत सारी जो फैक्टर्स हैं, डोमेस्टिक भी और इंटरनेशनल भी, यहाँ पर महंगाई को कहीं ना कहीं इंक्रीज करता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। और लगातार हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स की, काफ़ी सारे पदार्थों का प्राइस ऊपर जाता हुआ नज़र आ रहा है। हमने साथ ही ये भी बात की थी कि जिस तरीके से कोविड का समय था, पीक चल रहा था, अब वो वैसा समय नहीं रहा है और काफ़ी नॉर्मल सिचुएशन यहाँ पर होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये भी हमने बात की थी कि पॉलिसी नॉर्मलाइजेशन की भी बात गवर्नर करेंगे और क्या उसके लिए एफर्ट्स लिए जा रहे हैं, क्या स्टेप्स मेजर्स लेंगे, उसकी बात करेंगे, उसका जिक्र करेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि SDF, MSF, ये सब जो है, SDF है जो लिक्विडिटी देता है, MSF है जो लिक्विडिटी को कंट्रोल करता है, और ये दोनों ही जो इंस्ट्रूमेंट होंगे वो बैंक के डिस्क्रिप्शन पे रहेंगे, यानी कि बैंक अपना डिसीजन खुद से ले सकते हैं किस तरीके से उनको अपनी लिक्विडिटी, उनको अपना पैसा मैनेज करना होगा। तो यहाँ पर ये है, OMOs हैं या FRR हैं, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो लिक्विडिटी के लिए उन्होंने जिक्र उनका किया है। इसके अलावा कई सारे दूसरे पॉइंट्स भी थे जो अदर देन पॉलिसी उन्होंने बताया। पैसे जो हैं, गांव की बात कर लीजिए आप या कहीं की भी बात कर लीजिए, अब लोग विदाउट कार्ड के ब्रांचेस में से या ATMs में से जाकर पैसा निकाल सकते हैं। ये उन्होंने एक सुविधा, एक फाइनेंशियल तरीके से इंक्लूजन की सुविधा हमने देखी कि यहाँ पर अनाउंस की गई है। साथ ही जो प्री कोविड यानी प्री पैंडमिक के समय का जो फाइनेंशियल मार्केट का समय था उसे भी रिस्टोर कर दिया गया है। 9 बजे से शुरू होगा, लेकिन जो क्लोजिंग टाइम है उसमें कोई बदलाव नहीं किए गए हैं। इसके अलावा हमने कई सारे ऐसे पॉइंटर्स देखे, गवर्नर ने बताएं कि जो पॉलिसी नॉर्मलाइजेशन के लिए या लिक्विडिटी के लिए कई सारे ऐसे कदम फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए भी लिए गए हैं। तो मोटा मोटी यही बात है कि स्टेटस को मेंटेन किया गया है, रिवर्स रेपो रेट में बदलाव जरूर किया गया है, अकोमोडेटिव स्टांस को थोड़ा सा ट्वीक किया गया है, ग्रोथ प्रोजेक्शन और इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन में भी बदलाव किया गया है, और साथ ही जो पॉलिसी नॉर्मलाइजेशन है उसकी तरफ हम बढ़ते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। श्यामा, जैसा कि हम जानते हैं कि बाजार से लिक्विडिटी को कम करने की भी एक कवायद यहाँ से नजर आई है, साफ तौर पर उन्होंने जो घोषणाएं की हैं, कितना फायदा इससे मिलेगा भविष्य में? जब हम बात करते हैं कि पैंडमिक का समय था और काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत था लिक्विडिटी का, तब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, भारतीय रिजर्व बैंक ने कई सारे मेजर्स लेके, कई सारे अनाउंसमेंट्स लेके लिक्विडिटी इंजेक्ट किया था सिस्टम में, ताकि कहीं भी कोई डिसरप्शन ना हो। लेकिन अब जो ये लिक्विडिटी है वो कहीं ना कहीं एक्सेस में हम देख रहे हैं कि ये मौजूद है, और जो 17.2 लाख करोड़ का जो ये एक राशि था वो इंजेक्ट किया गया था, वो पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं हुआ, और उसमें से कुछ जो है अमाउंट वो वापस भी रिटर्न हुए थे लैप्स होने की वजह से या ऐसी कोई रीजंस की वजह से। उसे अब वापस लेने का समय गवर्नर ने बताया कि आ चुका है, और वही अब कैलकुलेटेड तरीके से, कैलिब्रेटेड और धीरे तरीके से इसे ओवर द ईयर्स, यानी कि एक बार में इसे नहीं खींचा जाएगा, इसे ओवर द ईयर्स, मल्टी ईयर्स टाइम फ्रेम में खींचा जाएगा, जिससे कोई भी सिस्टम को डिस्ट्रप्शन ना हो, कहीं भी कोई मतलब यानी कि इसकी वजह से, खींचने की वजह से कोई कहीं इसका ठेस ना पहुंचे। इस तरीके से, इस ग्रेजुअल तरीके से उसे लिया जाएगा। तो हम जानते हैं कि लिक्विडिटी की जब ज़रूरत थी तब पूरी तरीके से लिक्विडिटी इंजेक्ट की गई थी सिस्टम में कि सभी एंड्स को सपोर्ट मिले। अब जब हम देख रहे हैं कि सिचुएशन काफ़ी बेहतर है, क्योंकि तीसरा वेव जो है वो भी अब पूरी तरीके से एब होता हुआ नज़र आ रहा है। कई सारे राज्यों की बात कर लीजिए तो उसका जो कोविड पॉजिटिविटी दर है वो काफ़ी नीचे आ गया है। इसकी वजह से अब सिचुएशन भी नॉर्मलाइज हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ चुका है, सर्विसेज भी जो हम देख रहे हैं कि वो नॉर्मलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। रूरल की बात कर लीजिए, अर्बन की बात कर लीजिए, सभी जगह पर डिमांड भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, जो एक्टिविटीज़ है वो भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो ओवरऑल जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो ट्रैक पर आ रही है, वो जो डिरेल्ड हुई थी वो ट्रैक पर आ रही थी। इसीलिए अब समय है कि जो एक्सेस लिक्विडिटी है, ज़्यादा लिक्विडिटी सिस्टम में बनी हुई है, उसको कहीं ना कहीं कम किया जाए और नॉर्मलाइज किया जाए। बिल्कुल। अगर हम रिवर्स रेपो रेट की बात करें, क्योंकि हम जैसा कि जानते हैं कि 0.40% की बढ़ोतरी उसमें की गई है, उससे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा आने वाले समय के लिए?
जी देखिए, रिवर्स रेपो रेट तो वो होता है जो बैंक्स उनसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पैसे लेते हैं। तो यहाँ पर जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसे इंक्रीज कर रहा है तो जाहिर सी बात है ये कंज्यूमर्स तक भी पहुँचेगा। जो बैंक्स हैं, जो भी लेन देन होगा, या लोन की बात कर लीजिए या जिसकी भी बात कर लीजिए, वो कस्टमर्स तक भी पहुँचेगा। तो आने वाले समय में इसको थोड़ा स्टडी ज़रूर करना पड़ेगा किस तरीके से बैंक्स इसे अपने कंज्यूमर्स तक, अपने कस्टमर्स तक पहुँचाएंगे, या इसका वो एक तरीके से सीमलेस या ट्रांजैक्शन होगा या किस तरीके से होगा, वो थोड़ा जानकारी हमें लेना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि अगर